अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मीट एंड टॉक। और जी हाँ, मीट एंड टॉक में आपको पता है कि हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कुछ इंटरेस्टिंग सी पर्सनैलिटीज के साथ। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरी लक ये रही है कि मेरे ऊपर उस्तादों का हमेशा एक खास करम रहा है कि मैं जो हमारे टीचर्स होते हैं, जो मेंटर्स होते हैं, उनसे बहुत मुलाकात करने का मौका मिलता है इस शो के तसलसल से। और आज मैं ये कहूँगा कि जिस फील्ड से मैं चाहता हूँ कि मेरी आगे भी ज़िंदगी जैसा कनेक्टेड रहे और जिसमें मैंने बहुत कोशिश की अपने आप को समझें कि सुधारने की, पढ़ने की और समझने की, दैट्स मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। और आज जो मेरे पास गेस्ट मौजूद हैं उनका एक बहुत अच्छा लाइफ का एक्सपीरियंस रहा है एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग से रिलेटेड। और मैं तकरीबन जितने भी स्टूडेंट से मुलाकात करता हूँ जो उनके ज़ेरे दर्स पढ़ चुके हैं, वो हमेशा बताते हैं कि भाई मार्केटिंग के लिए शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट टीचर। सो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनके इल्म में अमल में सब इजाफा फरमाए। और विदाउट एनी ड्यू मैं ये कहूँगा कि मैम आयशा लतीफ़ आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मैम। Walaikum Assalam, Atik. Thank you so much for inviting me to this wonderful place that you have here. It's an honor. सेम हियर मैम। मैम आप ये बताएं कि आपका स्कूलिंग कहाँ से हुई, स्कूलिंग के बाद आपका कॉलेज कैसा रहा और बचपन में क्या बनने का शौक था? That takes me बहुत पीछे, but yeah, so I completed my O-levels from Convent of Jesus and Mary, which is also our neighbor over here, next to our university in Clifton. After finishing my O-levels, I finished my A-levels from Karachi Grammar School, and till then I had already started getting interested in business studies. So one of the subjects in my A-levels was business studies, and I really enjoyed it, and I was like, wow, this is something I really like. It was very early in my life, but by then I had sort of an idea कि इसी में जाना है. So then I applied to IBA for my BBA honors at that time, and I joined IBA. I completed it in 99 with the majors in marketing, and alhamdulillah I had excellent teachers in IBA. I had a great internships experiences. It just continued to build that passion in me for marketing and to learn more and more, and that continued. That journey was really good, and then right after I graduated, I was able to get a really wonderful offer from Procter & Gamble as assistant brand manager in their soaps and paper products division. तो वहाँ पे it was just like jumping into the deep end of the pool, like I tell my students. They give you a lot of responsibility from day one. They start taking you in their decision making meetings from day one. तो काफ़ी आपको वो ग्रूम करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर देते हैं. It's a wonderful experience to be in that organization in Procter & Gamble in the marketing department. And आपको पता है world over Procter & Gamble is known for their marketing orientation and their brand development. So that was a good but very brief journey. Unfortunately, I left it a little early, and then I had my family, I had my children, so I got engaged on the personal side of my life. And but learning process continued. I've always tried to find and read up more on marketing, and then I started to teach. So I came into the education sector and I started teaching from about pretty far back, about 2001 se I've been teaching. And I've taught in CAMS, I've taught in grammar school, Karachi Grammar School, and then I came here in Zavist in 2008. So I taught as a visiting faculty. Us waqt I was given more of English courses and management courses, but I enjoyed teaching whatever I was given. But when I actually got as full-time faculty in 2010, that's when I started getting marketing courses. So from 2010 till now, mashallah, it's been a wonderful journey at Zabis. Given the level of autonomy जो यहाँ पे दी जाती है faculty को, उनको teaching methodologies try करने की full freedom होती है, उनको different events कराने की, learning by action, teaching by action, वो कराने की बहुत ज़्यादा encouragement मिलती है. So that was just perfect for my style of teaching, and that's how I've been taking my courses along. And students अब तो माशाल्लाह बहुत सारे graduate हो गए हैं. So that's my journey. Again एक चीज़ बहुत ही मुझे एक चीज़ फैसिनेट भी कर रही है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि माशाल्लाह अब आप टीचर हैं और आपने एक लंबा हिस्सा अपनी रेगुलर टीचिंग को दे दिया, just like one ticket. So तभी स्कूलिंग जब आप मेरी जैसे में पढ़ रही थी, तभी था दिमाग में मैं टीचर बनूंगी, एंड देन अगेन आई हैव परस्यूड दिस करियर. अगेन मैंने आपको कहा था बचपन में एक बच्चे का होता है मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, पायलट बनूंगा, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं.
आप बचपन में क्या सोचती थी, और टीचिंग की साइड आने का डिसीजन, ऑब्वियसली आपने थोड़ा बताया भी कि आपकी फैमिली एंगेजमेंट्स की वजह से जॉब और भी बहुत सारी हो सकती थी, आप समवॉट मेरे जितना आपको जस्ट लाइक आपके बारे में सुना है तो आपने एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में भी काम किया है, तो जॉब तो बहुत सारी हो सकती थी, स्पेसिफिकली टीचिंग। ओके, सो इफ चाइल्डहुड की बात करें तो उस वक्त एज सच नॉट रियली, आई डोंट नो, हम लोग के सोसाइटी में या तो बच्चियों में इतना ज़्यादा वो फ्यूचर प्लानिंग या करियर प्लानिंग, या मे बी इट वाज मोर स्पेसिफिक टू माय फैमिली, इतना ज़्यादा नहीं था. आई विश इट वाज, बट जस्ट सेम थिंग, टीचर बन जाएंगे या नहीं बनेंगे, मोर ऑफ लाइक हाउसवाइफ. सो वहाँ उस लेवल पे इतना पीछे जाकर तो आई डोंट रिमेंबर हैविंग अ पैशन टू डू समथिंग स्पेसिफिक इन टर्म्स ऑफ करियर or profession. लेकिन once I came into MBA and A levels and MBA, तब तो I was very very passionate about marketing, so I really wanted to join a good marketing company. I was full of ideas and energy about branding and marketing और इसको कैसे कर सकते हैं और execution. So I really wanted to join and do a really good job in marketing side, especially brand side, not agency side. So that is what I really wanted to do, and education somehow becomes a little convenient for women who are trying to balance personal and professional life. But up to mashallah, it's become a very different scenario, and I'm proud to see that women are managing full-time careers in organizations. Organizations have become very flexible in accommodating the requirements of a new mother, let's say, or of a mother with small children, with flexi hours and virtual work from home options. So up to they are very conducive, but us time pe of course it was a bit rigid कि you have to do a 9 to 5, then you have to do a 9 to 5, चाहे आपके बच्चे बड़े हैं छोटे हैं whatever. So that's why I had to make that shift. Agencies की side पे I have had exposure to working with them, but on projects. So I've worked briefly with agencies on projects. While I was working with Procter & Gamble, I worked with Mediacom, I worked with Mindshare. So I mean Mindshare तो नहीं उस वक्त नहीं था, but Mediacom was there and we worked a lot because उनके सारा काम agencies के through होता था. तो हमने JWT के साथ बहुत काम किया, हमने उसके बाद उनकी चेंज हो गई एजेंसी साची एंड साची के साथ किया, बट आई हैवंट रियली डन अ जॉब, proper full-time job with an agency. I've done a lot of contract work with agencies, which has been very good. I learned a lot from it. अच्छा, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग तो सवाल होगा, क्योंकि आप मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग से ताल्लुक भी रखती हैं, तो स्पेसिफिकली एजेंसीज के साथ आप किस रोल पर काम करती थी? जैसे लाइक कमर्शियल्स को डिजाइन डेवलप करना, प्रोडक्शन साइड होता था, कंटेंट साइड होता था, और थोड़ा सा हमारे स्टूडेंट्स को बताएं कि एजेंसीज के अंदर काम होता कैसे है. जैसे लाइक एक बंदा टीवी में कमर्शियल तो देख लेता है, जैसे लाइक उसकी कास्टिंग, उसका क्रू, उसकी स्टोरी बोर्ड, उसका स्टोरी लाइन, टाइम लाइन, बहुत सारी चीजें होती हैं. थोड़ा सा अगर आप ओवरव्यू हमारे व्यूअर्स को देती तो बहुत हमारे लिए. श्योर. एजेंसीज इन पाकिस्तान तो अब बहुत ज़्यादा फॉर्मलाइज हो गई है, पहले बहुत ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स होते थे. एजेंसीज जैसे आपने बताया, दे डू एवरीथिंग फ्रॉम रिसर्च, टेकिंग आउट कंज्यूमर इंसाइट्स, मार्केट इंसाइट्स, कैटेगरी इंसाइट्स निकाल कर, और फिर वो टीजीज को डिफाइन करना, टारगेट ग्रुप्स को डिफाइन करके, और फिर एक्चुअल वो प्लान जिसके लिए आपके पास स्ट्रैटेजी मैनेजर्स अलग होते हैं, क्लाइंट की स्ट्रैटेजीज को देखना और फिर उनको क्लाइंट के साथ डिस्कस करना और फिर उसके एग्जीक्यूशन प्लानिंग करना. सो it all starts from research. So even in research agencies, there are very clear cut teams, if not departments, there are clear cut teams that are made, and each team is very responsible and interdependent on each other. तो पहले आपको research team मिलेगी, वो आपकी सारा फील्ड वर्क करेगी, या फिर आप वो रिसर्च एजेंसी से लियाज़ करके और कंज्यूमर इंसाइट्स निकलवाएगी, या फिर कस्टम रिसर्च करवाएगी, या सब्सक्रिप्शन बेस्ड रिसर्च को लेगी, उसको स्टडी करेगी, उसमें से कंज्यूमर इंसाइट्स निकाल के आप स्ट्रैटेजी को देते हैं. स्ट्रैटेजी डिपार्टमेंट जो है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग द मैच, टू क्रिएट द मैच बिटवीन द brief that the client has given. So the client always gives a project brief or a campaign brief. वो एक 1 pager होगा, 2 pager होगा, डिपेंड करता है क्लाइंट खुद कितना वेल वर्स्ड है इन गेटिंग वर्क डन फ्रॉम एजेंसीज. कुछ क्लाइंट्स को एजेंसी से काम उनको एक तरह से ब्रीफ क्रिएशन जो है वो इतनी सॉलिड नहीं होती, तो फिर वो बहुत वेग टाइप की आपको ब्रीफ देते हैं, तो उसमें जो है ना एजेंसी को बहुत काम करना पड़ता है टू एक्चुअली मेक सेंस ऑफ इट. और कुछ क्लाइंट्स आर वेरी वेरी गुड एट हाउ टू
create the agency brief so that they know exactly what is required and then they can work from there. तो आपकी strategy का जो department है agency में, वो आपके client की brief लेता है और वो consumer insights लेता है और उसके अंदर एक match making करता है कि this what can we do. वो जो big strategy जब एक दफ़ा आ जाती है, big idea generate हो जाता है, big strategy आ जाती है, उस big idea और big strategy को अगर आप pass on कर दें तो वो जो execution planning की टीम है फिर वो उसके ऊपर creatives बनाएगी कि अच्छा ठीक है, ये big idea है जो हमें बताया गया स्ट्रैटेजी एंड अब हमने इस पे एग्जीक्यूशन प्लान बनाना है, तो अब इस आइडिया को हाउ डू वी पुट इट इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग, हाउ डू वी पुट दिस आइडिया इन द फॉर्म ऑफ एन एड, हाउ डू वी पुट दिस आइडिया इन द फॉर्म ऑफ डिज़ाइन. और इसमें जब आपके पास प्रोजेक्ट ब्रीफ होता है कंपनी की तरफ से, तो कभी कभार जो क्लाइंट बड़ा होता है अगर या ज़्यादा ऑर्गेनाइज होता है तो उसके बाद ब्रांड मैनुअल भी होता है, तो वो एजेंसी को ब्रांड मैनुअल भी हाथ में देगा और प्रोजेक्ट ब्रीफ भी देगा. सो टू मेक श्योर दैट आप जो भी क्रिएटिव डिज़ाइन करें या जो भी आप आइडिया, इट हैज़ टू कनेक्ट एंड इट हैज़ टू बी इन लाइन विद द ब्रांड मैनुअल. कोई चीज़ कॉन्ट्रडिक्टी नहीं होनी चाहिए. ब्रांड मैनुअल में अगर कलर्स, फॉन्ट्स, साइजेस, पोजिशनिंग, एसोसिएशंस डिसाइडेड हैं तो आपकी एजेंसी फिर उसी के हिसाब से अपने क्रिएटिव्स बनाएगी, उसी के हिसाब से एक्टिविटीज़ और कैंपेन्स को प्लान करेगी. इवन हम देखते हैं कि एमएनसी की जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं वर्ल्ड वाइड, अगर उनका थीम देखा जाए तो जैसे आपने कहा फॉन्ट, कलर, साइज, सारी चीज़ें, इवन जो आर्टिस्ट आप यूज करते हैं उसकी ड्रेसिंग, उसका पूरा अटायर, एंड देन अगेन उनकी जो जैसे एक अपनी प्रेजेंस, हाइट, ये वो सारी चीज़ें काउंट होके मैंने देखा है कि इस तरह ही बिल्कुल. और फिर वो इससे जो है ना कंज्यूमर ऑडियंस के दिमाग में एक फॉर्म, एक सेट हो जाता है, एक यूनिफॉर्मिटी आ जाती है, एक आइडेंटिटी जो है वो सेट हो जाती है कि अच्छा ये कलर्स जब हम देखेंगे या ये वाला ब्रांड का इमेज देखेंगे या ये चीज़, तो इससे तो डेफिनेटली ब्रांड इज हुक्ड. सो वो ब्रांड एसेट्स होते हैं विच आर मस्ट बी कंसिस्टेंट. वो ब्रांड एसेट्स कंसिस्टेंट रहेंगे तो आपको 20, 25, 30 साल के बाद भी ब्रांड रिकॉल नजर आएगा लोगों में. आप जब काम करती थी, क्या आप एज प्रोजेक्ट डायरेक्टर काम करती थी, लाइक पूरे प्रोजेक्ट को डील करती थी, या स्पेसिफिकली किसी एक डोमेन के ऊपर आपका एम्फसाइज होता था? It was always project driven. It was always, for me it was always project driven. और जो भी ज़्यादातर हमें मिले हैं projects, it was always related to research. So there were many capstone projects also, many external projects that I've done with my strategic marketing students at MBA level, and उनको बड़े serious type के projects मिलते थे और उनके साथ जब मैं I used to be like a part of the team, तो उनको it's always starts with research. So the primary thing they want from us is research. They want strategy, recommendations, लेकिन एग्जीक्यूशन प्लानिंग तक जो है ना वो फिर इट नीड्स अ लॉट ऑफ टेक्निकल नॉलेज. तो आई हैव नेवर रियली वर्कड ऑन एन एक्चुअल एग्जीक्यूशनल प्लानिंग विच इंक्लूड्स मीडिया प्लेसमेंट्स. तो एज आई वाज सेइंग कि रिसर्च और स्ट्रैटेजी के डिपार्टमेंट के बाद जो नेक्स्ट चीज़ है जो एग्जीक्यूशन बनाती है, आप समझें कि एग्जीक्यूशन प्लान बन गया आपका, ठीक है, चाहे वो डिजिटल मीडिया हो या कन्वेंशनल प्लस डिजिटल हो. उसके बाद वो मीडिया एजेंसीज के साथ काम करना होता है कि अच्छा हमने इतने TRPs GRPs अचीव करने हैं, तो आप बताएं मीडिया प्लेसमेंट ये आपका काम है. तो इफ़ यू कांट अफोर्ड अ मीडिया एजेंसी, तो फिर आपके पास एक ऐसा एक्सपर्ट होना चाहिए टीम में जो उस पर्टिकुलर जितना भी कंटेंट आपने क्रिएट किया है, जितने भी क्रिएटिव्स आपके क्लाइंट के अप्रूव हो गए हैं, उनको प्लेस किधर करना है. मीडिया प्लानिंग एंड बाइंग. Yeah, so media platform and yeah. So we're gonna discuss much about media planning and designing and so on so forth. This is time to take a break. Stay tuned. This is Atiq and you're watching Meet and Talk. वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मीट एंड टॉक, और मैंने आपको पहले भी गुजारिश की थी कि ब्रेक के फौरन बाद हम बात करेंगे मैम से ढेर सारी, और आपको बताया कि मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि अपने गेस्ट से ज्यादा नॉलेज की बात की जाए. तो आज मैं उसी चीज़ को, उसी पॉलिसी को फॉलो करूंगा. मैम, हम बात कर रहे थे मीडिया प्लानिंग एंड बाइंग की. तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं मीडिया प्लानिंग एंड बाइंग के अंदर. तो इस वक्त बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक, मैं जैसे आपके साथ ब्रेक में भी बात हो रही थी क्रिकेट, तो आप बहुत कुछ मुझे समझा भी रही थी कि मीडिया प्लानिंग एंड बाइंग के अंदर इस तरह की चीज़ें होती हैं. तो मैं चाहूँगा कि यही एक क्रिकेट जो इस वक्त सिनेरियो चल रहा है, तो उसके हवाले से थोड़ा सा अगर आप हमें समझाएं कि मीडिया प्लानिंग एंड बाइंग के अंदर होता क्या है, क्या क्या होता है, किस चीज़ को कैसे चलाना, थोड़ा सा अगर इससे. Sure. So media planning and buying has now become a very specialized industry, you could say, and there are a lot of agencies that are doing really well in that. So if you take the example of World Cup, इस वक्त जो T20 World Cup चल रहा है, if you remember, early on in the tournament, Pakistan wasn't doing well at all, and it was really going down. So a lot of people, a lot of audience was switched off from watching the matches, and only real true cricket lovers were really watching it. So overall audience went down, and then slowly when the
the fever started building up and Pakistani team started winning matches and eventually semi-final bhi jeet liya. So over that time the tempo has increased again up to this peak point right now where everybody is watching every single minute of every match, even if it is not Pakistan playing, but to see who will be Pakistan's competitor in the final. तो इस वक्त इतनी ज़्यादा viewership बढ़ी हुई है, TV audience viewership इस वक्त maximum पे है on all the channels, चाहे वो OTT channel हो, over the top channels हो, चाहे वो app based channels हो या चाहे वो हमारे television के channels हो. और जहाँ जहाँ वे match नज़र आ रहा है वहाँ पे you must have seen there is a huge number of advertisements that are trying to play. Their particular slots are very expensive. तो होता ये है कि if something like this happens and इस मौके को फुली इनकैश करने के लिए जो मीडिया बाइंग हाउसेज होते हैं, मीडिया एजेंसीज होती हैं, दे हैव ऑलरेडी बॉट स्लॉट्स. उनके पास ये स्लॉट्स पहले से खरीदे हुए होते हैं, चाहे वो पीक टाइम के स्लॉट्स हों, ऑफ पीक आवर्स के स्लॉट्स हों, दे हैव ऑल द स्लॉट्स रेडी. नाउ व्हेन दिस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कम्स, ऑल द ब्रांड्स, ऑल द कंपनीज हु वांट टू एडवर्टाइज ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स, दे रश टू दीज मीडिया बाइंग एजेंसीज एंड दे इमीडिएटली वांट कि नहीं प्लीज हमें तो चलाना ही है ऐड, आप प्लीज हमें एक स्पॉट दे दें, 2 स्पॉट दे दें. इट्स ऑल अ मनी गेम. जो जितना पैसे दे सके और वो स्लॉट्स के लिए खरीद सकें, वो उतने स्लॉट्स के हिसाब से वो कहते हैं हमारा एड प्लेस करवा दें. एंड इट्स नॉट जस्ट अ फुल 30 सेकंड एड. अब इतना ज़्यादा जब रश होगा तो 15 सेकंड शॉर्ट एड्स होते हैं, आपके टिकट्स चल रहे होते हैं, नीचे आपके बम्पर्स चल रहे होते हैं. जब आपका जो देखा होगा आपने कि मैच का स्क्रीन छोटी हो जाती है और साइड पे आपके एड्स चलना शुरू हो जाते हैं. सो देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज टू गेट दैट एक्सपोजर. व्हाट आर दे ट्राइंग टू गेट? दे ट्राइंग टू गेट आई बॉल्स. तो मीडिया एंड बाइंग हाउसेज एंड मीडिया एजेंसीज हेल्प देम टू गेट दीज आई बॉल्स. और इसके लिए एवरीबडी इज विलिंग टू मेक मनी एंड दिस इज अ टाइम व्हेन मीडिया बाइंग एजेंसीज and media houses, they earn a lot of money. This is their time to earn as much because this kind of hype जो है ना ये cash हो सकती है and brands are desperate to get that type of exposure to millions of eyeballs at the same time. Imagine reach कितनी मिलती होगी उनको, उनके एक और फिर एक दफ़ा नहीं, कई आपने जो बड़े brands हैं उनमें देखा होगा आपने 3-3, 4 दफ़ा ad चल रहा है, तो उनकी frequency इतनी high हो जाती है कि आप समझें कि ये अभी अगर उन्हें चलाया ना 1 साल तक इसका असर रहेगा उनके ब्रांड के रिटर्न्स पे, उनके ब्रांड के इम्पैक्ट पे. इसका जो कन्वर्जन रेट है वो 1 साल तक इसका फ़ायदा उठाएंगे. तो इसलिए इस वक्त वो लोग इतना पैसा देने को तैयार हैं जस्ट टू गेट अपॉर्चुनिटी टू गेट अ स्लॉट इन दैट गेम. अच्छा मैम, एक चीज़ और भी मैंने अभी ऑब्जर्व की है मीडिया के अंदर कि जब पाकिस्तान सेमीफाइनल में नहीं था, चांसेस थे आने के, तब तक किसी भी टीवी चैनल पे रिव्यू बेस्ड शो ही नहीं थे. मैंने एक तो दोस्त से अप्रोच किया, मैंने कहा भाई कोई शो वो करोगे, मतलब इस दफा के बोला यार वो पाकिस्तान खुद जो है ना बेचारा समझ में नहीं आएगा कि आएगा जाएगा, सेट वेट कुछ भी तैयार. और सडनली जैसे अनाउंसमेंट हुई कि पाकिस्तान को प्ले सेमीफाइनल, आप मतलब जो चैनल्स ब्रॉडकास्ट नहीं कर रहे थे तो उन्होंने एक सेट लगाया और शुरू कर दिए, क्रिकेटर्स को हायर करना शुरू कर दिया. एंड देन अगेन आप देखें तो एक वाकई बूम सा लगा हुआ है और पावर्ड बाय एन एसोसिएशन बाय. बिल्कुल अजीब, मतलब आप देखेंगे यार क्या कंटेंट क्रिएशन बहुत फ्लड हो गया. कंटेंट क्रिएशन और जल्दी कर रहे हैं ये लोग. कंटेंट क्रिएशन जो प्रोग्राम कंटेंट जो स्ट्रीमिंग करना चाह रहे हैं, इट हैज टू बी वेरी रेलेवेंट. तो ये चीज़ बहुत तेजी से करनी होती है. One thing is like a jingles. Yeah. We used to listen World to Cup jingles and stuff like that, but this time hardly we found any jingles for this. But let's see, Pakistan. बल्कि एंथम्स होते थे, आई रिमेम्बर. और वो हमारा जो अपना लोकल PSL होता है उसके जो एंथम्स हैं, पीपल लुक फॉरवर्ड टू इट. म्यूजिक बैंड्स आर अर्निंग फ्रॉम दोज एंथम्स. हर टीम का अपना एक एंथम बनता है, तो वो इस दफ़ा जो है फॉर एटलीस्ट T20 वर्ल्ड कप हमारे टीम के लिए नहीं बना. तो इसलिए अब जब जाग आई है तो एवरीबडी इज ट्राइंग टू डू समथिंग इन टर्म्स ऑफ कंटेंट क्रिएशन. बल्कि आपको सॉरी टू इंटरप्ट, एक और चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आपको पता है एड्स का क्लटर बहुत बढ़ गया, लाइक यू वर सेइंग कि यू नो, और फिर रेपिटेटिव एड्स भी होते हैं तो उसमें अक्सर स्किपिंग हो जाती है, यू नो, कि ऑडियंस जो है फॉरेन चैनल स्किप कर देती है अगर एड्स शुरू हो जाएं दूसरे से. बिकॉज ऑफ दैट नाउ ब्रांड्स हैव बिकम वेरी स्ट्रेटेजिक एंड दे बिकम वेरी इंटेलिजेंट. अब वो क्या करते हैं, एसेट्स खरीदते हैं. जैसे इंटरेस्टिंगली कूल एंड कूल ने लास्ट 2 साल जो कॉइन टॉसिंग मोमेंट होता है उसको उन्होंने ब्रांड कर दिया, एज अ ब्रांड एसेट खरीद लिया, उसको बेचा गया. और अब कूल एंड कूल का क्या था कि वहाँ मैट लगा हुआ था और कूल एंड कूल की टी-शर्ट पहन के एक बच्चा गया, उसने कॉइन पकड़ाया, कॉइन टॉस हुआ. सो ये जब आपको पता है कि ऑल आइज आर ऑन द कॉइन एंड कॉइन, यू नो, किस साइड जो है वो डिसाइड व्हाट टू डू फर्स्ट, तो वो मोमेंट जो है ना उन्होंने उसको एसेट कन्वर्ट करके और वो बेचा. सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स ब्रेक द क्लटर.
अब वो एड अगर बीच में डाल देते, 10 एड्स के बीच में कूल एंड कूल का एड चल रहा है, वो किसी ने नहीं देखना था ना याद रखना था। लेकिन अब वो एसेट उन्होंने कॉइन टॉसिंग वाला ले लिया, वो इट ब्रोक द क्लटर। तो अब ये लोग इस तरह की भी चीजें करने लग गए हैं। इवन आप ये देखेंगे दराज took a very great step into the field of marketing. Amazing. उन्होंने पूरी मैच को जस्ट लाइक ब्रॉडकास्ट कर रहा, और इनकी अभी 11-11 की सेल वाला मामला, अब जस्ट लाइक पाकिस्तान 12 को फाइनल खेलेगा या 13 को फॉर एग्जांपल, तो लोग इनका जो जस्ट लाइक जितना भी फुटफॉल था इनकी वेबसाइट की तरफ, वो कंटिन्यूस रहेगा, और लोग 4-4 5-5 घंटे तक इनकी वेबसाइट के साथ एसोसिएट रहेंगे, Phenomenal. चलेंगे। जस्ट लाइक डिजिटल मीडिया के अंदर जो स्ट्रीम करना है और उसके साथ अर्निंग का जो पर्सपेक्टिव हमने मीडिया प्लानिंग बैंक का कहा, तो मैं कहूँगा इसमें एक वाइटल एग्जांपल है दराज पाकिस्तान के लिए। डेफिनेटली मैम, ये बहुत सारी चीजें और भी डिस्कस होंगी, मगर मैं ये आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि ज़ैबिस्ट में मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड क्या क्या कोर्सेज पढ़ाने का इत्तेफाक रहा? Oh, it's been a wonderful journey here. Marketing is highly, it's like one of those babies of Zabis जो बहुत ही हम उसको बहुत pamper करते हैं. So we're always trying to introduce new and good kind of latest kind of electives. ऐसे type के courses हों, ऐसे type के electives हों जो आपके current need of the market को cater करें. So basically, I've been into core courses. So I've taught all the core courses in undergrad and in master's program, like marketing principles, marketing management, strategic marketing. I've taught retail management and over again. So I've realized that I've had to update myself also in terms of what I need to tell the students and what they need to know when they go into the market. But as a fraternity of marketing teachers, I have always appreciated that Zabist makes sure that the teachers who are teaching electives come from the industry. They are some of the senior most and experienced marketers, practitioners sitting in different big companies like Group M and Mindshare and Mediacom. We have not only people from senior positions in big companies, we have people who are actually doing the running agencies of their own, and they are teaching it. तो वो जिस तरह से teaching करते हैं, वो they tell the ground realities. They teach the students from the practical point, and we are the academicians who make sure कि उनकी foundation strong है. तो जो core courses करें उसमें उनको foundation, उनके concepts, उनकी strategies उनको समझ आ जानी चाहिए, और आगे फिर जब वो जाएं electives में, तो उनको जो बाहर industry से experience लोग आते हैं, वो उनको उसी चीज़ की application पे और ज़्यादा hone in कर दें उनके skills को. So that's why it's a very well-rounded kind of a marketing education that Zabis provides, and I've alhamdulillah had really great students who are very willing to learn, willing to go out there and find companies who can help them further learn, and वो झिझकते नहीं हैं. Project जिस तरह का भी दे दो, challenging दे दो, external दे दो, internal दे दो, our students are very resilient, very resourceful and very very excited, very creative. तो ऐसे बच्चों के साथ फिर काम करने में भी मजा आता है. सही. मैम, इस सेमेस्टर में आप कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ा रही हैं? So this semester is very interesting. I have been given strategic marketing at MBA evening level and MBA day, and I'm also teaching business projects. So business projects in the undergrad program is actually a 3-credit capstone project, which is done in groups, and each group is supposed to go out into the market and find a real life project which a company awards them, and they have to finish it over a period of time. So I have 5 capstone projects at the moment that are under my wing on the undergrad side, and there are those which are in the master's level also. So a capstone project ko supervise karna is a very interesting experience and first time for me, because before this I was teaching only core marketing courses. Isme you have to be able to guide the students according to the requirements of the company. Wow. So if there are 5 different companies, there are 5 different proposals, 5 different project objectives that we have to fulfill, and each objective requires its own planning. So that's where the challenge is, and not only are the students learning, I'm learning a lot. And the best thing I found out from this is that our corporate sector is so cooperative. They're so willing to contribute to the teaching of our students, and I've been lucky to find really good, and these companies, some have been brought forward by the department, and some the student groups have found themselves, and these groups are so happy to work with these companies, and they are willing to mentor them, they're willing to teach them, and they're willing to help them in completing their project under their supervision. So that's what my current semester is like.
मैम स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग एक बहुत ही एक डिफरेंट, मैं कहूँगा कि इस तरह से होता है कि आपको स्ट्रेटेजिकली चीज़ों को जस्ट लाइक प्लेस करना होता है, और एक होता है कंज्यूमर बिहेवियर। तो कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ाने का इत्तेफाक रहा आपका? नहीं, as a separate course, I haven't taught consumer behavior in Zabis, but I have taught it as a part of strategic marketing, as a part of marketing. It's a part of every marketing course, but not as a specialist course or a special course. I haven't taught it separately because, of course, it has a lot of theories that are relevant to it. And so the forte is at the moment is in overall strategic marketing, and even in terms of research, I like strategic marketing. So strategic marketing mein, you're right, approach is more strategic, more broad based. You need to tell the students more about आजकल का क्या trend है. So I try to pick up the latest books for strategic marketing, and there's some amazing authors out there जिन्होंने थिंकिंग ही चेंज कर दी. जो कन्वेंशनल थिंकिंग थी मार्केटिंग से, उससे काफ़ी उन्होंने जो है ना चेंज कर दी और लेटेस्ट चीज़ें ला के सामने रखी हैं. फॉर एग्जांपल द पैराडॉक्स ऑफ मार्केटिंग, जिसमें उन्होंने बताया कि अब इस पॉइंट पे आके हम ऐसे CEOs देख रहे हैं जो अपनी नॉर्मल कॉन्वर्जेशंस, ट्विटर कमेंट्स में they are using a lot of marketing jargon, and so marketing jargon has become romanticized. Like everybody likes to throw these words of marketing, customer service, customer satisfaction, customer first, or branding. So they have this marketing jargon very much romanticized and really popularized among CEOs, amongst all level of the organization. But marketing as a function, as a department, is now being downplayed. So जो marketing people हैं, आजकल की बात कर रही हूँ, and in the broader spectrum they think कि marketing department people don't know maths. So marketing department people, they don't know how to measure performance. Marketing department people, they just talk about all the soft fluffy stuff. If you start discussing numbers with them, they're just totally lost. तो ये इस तरह के comments department के बारे में आते हैं या marketing related functionaries के बारे में. अब ये चीज़ paradox है कि जहाँ पे marketing as a सब्जेक्ट और एज कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत पॉपुलराइज हो रहा है, लेकिन मार्केटिंग एज अ जॉब, एज अ फंक्शन जो है वो डाउन प्ले हो रहा है. तो इस पे उन्होंने बहुत अच्छा डिमिट्रिडस एंड ने की बुक है विच इज़ एडवांस मार्केटिंग मैनेजमेंट. आई टीच इट टू माई स्टूडेंट्स. ब्रिलियंट बुक. लेटेस्ट चीज़ें उन्होंने बताई हैं कि क्या है इसमें. फिर वो पूरा चैप्टर इज ऑन न्यूरो साइंस मार्केटिंग. तो पाकिस्तान इज़ नॉट सो फार बिहाइंड. हम समझते हैं पाकिस्तान में कुछ नहीं हो रहा, लेकिन ऑलरेडी माशाल्लाह यूनिवर्सिटीज़ हियर हैव न्यूरो साइंस लैब्स. Or IBA Sakhar has a neuroscience lab. IBA has a neuroscience lab. We've been playing with the idea. Let's say, inshallah, Allah kare, Zabist also sets it up. It's really amazing. We got a tour of some of these labs and the kind of equipment जो उन्होंने लगाया हुआ है, और उसके थ्रू जो opportunities for research निकलती हैं, और उन researches के थ्रू जब आप strategy बनाएंगे तो it's more like going for a foolproof strategy. मतलब इस लेवल की आपके पास insights आ जाती हैं जो कभी कभार कंज्यूमर खुद भी नहीं जानता अपने बारे में, और आप जान लेते हैं. इंटरेस्टिंगली एक चीज़ उन्होंने बताई थी जब हम लोग इस टूर पे गए थे कि ये चीज़ तो सबको पता है कि साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स और साइकोलॉजी एक्सपर्ट्स हैव ऑलरेडी टोल्ड अस दैट आईबॉल मूवमेंट जो है ना वो ह्यूमन फेसेस पे फौरन जाती है. तो अगर आप एक सीन रखें या एड रखें, उसमें जहाँ पे ह्यूमन फिगर होगा, आईबॉल्स विल ऑलवेज गो देयर एंड दे विल स्टे ऑन द फेस मोर. So they said कि okay, if that's the case, तो उन्होंने फिर एक एड्स चलाए और उसमें सेलिब्रिटी का को डाला, और उसमें उन्होंने देखा कि आई बॉल्स जो हैं वो सेलिब्रिटी पे बहुत हैं. तो उन्होंने कहा लेकिन वी शुड नो कि ये सेलिब्रिटी है इसलिए आई बॉल्स फेस पे बहुत हैं, या ये साइकोलॉजी है कि ह्यूमन बीइंग्स विल ऑलवेज लुक एट द फेस. तो उन्होंने अननोन कंट्री के अननोन मॉडल्स का एड निकाल के दिखाया जब उसी न्यूरो साइंस लैब में. तो आई बॉल मूवमेंट फिर भी उसी बंदे के फेस पे जा रही थी बार बार, विच शोड के सेलिब्रिटी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है. फेस जिसका भी हो, इफ देयर इज अ ह्यूमन फेस. सो अल्टीमेटली companies who are creating these advertisements or agencies who are creating, they should understand कि human faces are very important. And movement, एक और चीज़ उन्हें learn की कि ad के अंदर जितनी जहाँ movement होगी ना, वहीं पे इंसान की आंख जाती है. तो eyeballs follow movement. तो उनका जो brand का logo है उसको किसी moving object के साथ attach करना पड़ेगा, क्योंकि movement जहाँ भी होगी scene में, वहाँ पे आपका eyeballs जाएंगे audience के. अब ये सारी discoveries और insights जो हैं ये neuroscience
इक्विपमेंट के थ्रू ही जो है इन्होंने ट्रैकिंग की है एंड दे फाउंड आउट. सो देयर इज अ ह्यूज वर्ल्ड ऑफ रिसर्च गोइंग ऑन. एथिकल एंड अनएथिकल का एक अलग पूरा सब्जेक्ट है. व्यूअर्स, इस ब्रेक के बाद हम बहुत सी चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि एक चीज़ आती है नीड एंड डिमांड, और कुछ चीज़ें जनरेट करवानी होती हैं, कुछ एग्जिस्टेंस में होती हैं, और किसको रिकॉल करना होता है. ये सारी चीज़ें हम इस ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे. तो स्टे ट्यून्ड. दिस इज Jab FM Digital and you are watching MEET&TALK. वेलकम बैक व्यूवर्स, आप देख रहे हैं MEET&TALK, और हर घड़ी बहुत ही अपने आप में एक मायने रखती है. कोशिश करें अपना टाइम ज़ाया ना करें और काम की बातों पर काम लगाया करें. कहते हैं कि ज़्यादातर बोलते हैं हमारे जैसे आर्टिस्ट, मगर ये बात आप याद रखिएगा कि हम काम की बात ही करेंगे. मैम, इकोनॉमिक्स पढ़ी, वांट डिमांड उसमें भी थी, मार्केटिंग में आए तो वो वांट और डिमांड की जगह नीड और वांट देखी. तो ये मार्केटिंग बेसिकली मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आया, नीड और वांट पे क्यों डिपेंडेंट है, और जब हम थोड़ा सा एलिमेंट को चेंज करते हैं तो डिमांड. एक साइकिल, लाइफ साइकिल सुना था कि भाई चीज़ें बनती हैं, फिर मार्केट आती है, फिर वही लोग जो मार्केट में जो कंपनी में काम करते हैं वो भी उसको खरीदते हैं. फिर ये अजीब चक्कर था. मैं चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा हमें क्लियर करें कि मार्केटिंग अंदर नीड, वांट, डिमांड, ये सब चीज़ें क्या और कैसे एग्जिस्ट करती हैं. Okay, so I think I would be changing some of the mindsets of people who might think in need, want and demand is the same in economics and in marketing. लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मार्केटिंग में इनके कॉन्सेप्ट्स काफ़ी डिफरेंट होते हैं. सो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ, यू नीड टू लुक एट नीड, वांट in terms of marketing, not in terms of economics. So what marketing teaches us, and like really big gurus of marketing who have done a lot of research in it, because I think कि हम जो कुछ भी सीखते हैं उनसे सीखते हैं, and they have done a lot of empirical studies to come up with these concepts and ground concepts. Need in marketing is not created by marketer. A lot of my students get shocked when they hear that. Need is always pre-existing. All human beings across the world have the same set of needs. Same set of needs, whether it is a Hulu warrior or Aborigine warrior in the Australian African jungles, या फिर हमारे urban में आकर आप urban jungle में कोई आप modern बच्चे को ले लें. Needs are always pre-existing, and they are the same for humans all over the planet. However, some of the needs are active and recognized and you know by the people, and some needs are latent or hidden. So एक चीज तो सेट हो गई, needs are pre-existing. Marketers don't create needs. They never. We can say that we need something, but that doesn't mean that the marketer has created that need. हम लोग जो है ना needs को at marketing level, it is actually a feeling of deprivation. It's not even something that you can call a product. So you don't say need is a product. I need this, so this is my need. It's a feeling of something missing in your life. Something that you want in your life, a gap in your life. That's a feeling of deprivation. So in marketing, need is not a tangible thing. It's a feeling of deprivation. Once you recognize that feeling is there in your life and you need something, or that need is recognized by you, you want to satisfy that need. So wants are based on your upbringing, your background, your education, your culture, your environment. Needs सबकी same होगी, लेकिन the way you satisfy your need and the way Aboriginal warrior satisfies that need in the jungle will be very different. So he will want fresh fruits and coconut water, but you will want a burger and French fries. So both of you are feeling hungry, but your want is different from the want of the Aboriginal warrior, right? Both have the need for food. Both of them are feeling hungry. So the feeling of deprivation is feeling of deprivation from food. But you want hamburger and you want fast food, and that Aboriginal warrior wants fruits from the trees, and he wants coconut milk. So that's how needs and wants are clearly specified in marketing. So need is a feeling of deprivation, and want is actually the way you satisfy that feeling based on your own culture and environment and upbringing and education and economy. And demand is actually how that want is converted into real numbers. Demand is for a specific company. Demand is for a specific brand. Demand is generated and can be numerically accounted for. आप want को measure नहीं कर सकते, ठीक है? आप intensity of want को measure कर सकते हो, but आप want को measure नहीं कर सकते. Demand को आप measure कर सकते हो. बिल्कुल. So that's the biggest difference between want and demand.
And I tell my students that want can be for a category of things, right? But a demand is for a specific brand. So if I want to lose weight, and that's coming straight from the heart actually. So if I want to lose weight, my need is to feel better health wise. My need is for health, not for looking brilliantly amazing, but for health. So the need is for health. I want to satisfy that need by losing weight. So my want is to lose weight through products or through exercise. These are the two things. I don't want to go for surgery. I don't want to go for anything else. I want to go for either products that can help me lose weight or exercise machines, exercise. So that leads me to demand. So I'm going to demand this amazing set of videos which I can follow at home, or वो बहुत super hit ladies की videos हैं which are carrying out these amazing fitness workout routines at home in small areas. That's I'm creating demand for, let's say, Leslie Simpson or Fabulous 50s or something like that, and they are doing a brilliant job and they have millions of followers, and so I've created demand for that ladies channel. And if I want fitness related products, and if I'm having slimming tea, so if I'm buying slimming tea from some Sri Lankan brand, I've generated demand for that Sri Lankan brand. Okay? So this is basically the basics. Endorsements. Yes, it's like you are willing to pay money. So it's like purchase intention. Demand is something you can monetarily calculate. You can forecast demand and you can say, okay, I'm the importer of Sri Lankan slimming tea, and I know that in the next quarter I can sell 10,000 units of Sri Lankan tea boxes. So I know that this much demand can be generated, and this is the amount of demand I can earn. So it's numbers, but I can't measure the want of ladies who want my tea. Okay. There can be intensity of want, I can measure it, but I can't put that into monetary value. That's the thing. अच्छा मैम, एक और भी प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी के अंदर कि हम सेल्स के पर्सन को और ब्रांडिंग के पर्सन को या हम एडवर्टाइजिंग के पर्सन को मार्केटिंग के दायरे में लाके खड़ा कर देते हैं. मतलब जस्ट लाइक आर यू मार्केटिंग पर्सन, फॉर एग्जांपल हम कहेंगे कि किसी एजेंसी से अगर हम बात करें, मीडिया प्लानिंग इन बैंक का बंदा हो, उसको भी हम उसमें खड़ा कर देते हैं. एंड देन अगेन जब सेल्स वाला बंदा आता है तो उसको भी हम कहते हैं मार्केटिंग. इसके ऊपर थोड़ा सा अगर आप अपनी तरफ से हमें थोड़ा सा समझा सकें कि ये थोड़ा डिफरेंट है, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, देन अगेन सेल्स या मीडिया बाइंग एंड प्लानिंग. बिल्कुल, एब्सोल्युटली. इसमें तो आई वुड से कि मुझसे अच्छा जो हमारे जो ग्लोबल गुरुज ऑफ मार्केटिंग है, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है हाउ दीज थिंग्स आर वेरी वेरी डिफरेंट. तो हम लोग के फादर ऑफ मार्केटिंग तो कॉटलर हैं, एंड वी आर ऑलवेज फॉलोइंग फिलिप कॉटलर, एंड उनके जो द अदर वन हु इज ऑलवेज राइटिंग विद हिम इज को-ऑथर केलर. सो इनके अलावा भी हैं, देयर आर लाइक, जैसे बायरन शार्प हैज रिटन एन अमेजिंग बुक ऑन हाउ ब्रांड्स ग्रो. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक. इट्स नॉट अ न्यू बुक, इसके 2 वर्जन्स निकल आए हैं, बट इसको लिटरली कंपनीज फॉलो कर रही हैं. सो यू आर एब्सोल्युटली राइट. Marketing is a tip of the iceberg. Marketing, I tell my students, marketing is an umbrella concept. Under the umbrella, there are a lot of things that you can specialize in, and as time is going forward, you can continue to specialize more and more in one of the avenues of marketing. But I still think that marketing is the all-encompassing concept. It's a huge field, and inside that field, you can go into branding and brand development. You can go into sales and sales management. You can go into media buying and media placements. You can go into promotional tool management. You can go into, so these are all part of marketing. But marketing is the umbrella concept. It covers everything. When I talk about advertising, I tell my students that a lot of students think that marketing is just advertising. At the most basic level, we've been taught 4 P's: product, price, promotion, place. And I say, promotion is just 1 P. There are 3 more P's in marketing. So marketing mix complete ही नहीं हो सकता unless there is an input of marketing into pricing, input of marketing into product, input of marketing into place, which is channels of distribution, and of course input of so it's not just about promotion and advertising and communication. Mark Ritson की आप videos देखें, they are amazing. He says कि marketing को जो है ना लोगों ने communication कर दी है. Like they think everything to do with marketing is communication. No, strategy comes first. Other P's also come. How can you decide, just ignore the other P's, ignore strategy and go straight to अच्छा आप ट्विटर पे चला लेते हैं, अच्छा टिकटॉक का वीडियो बना लेते हैं, अच्छा फेसबुक पे डाल देते हैं, अच्छा नहीं यूट्यूब पे डाल देते हैं. These are just platforms. These are just tools. But how will you decide which tool is right for your product and your brand and your brand's positioning? So strategy should come first. And before strategy, Mark Ritson says diagnostics,
strategy, tactics. This should always be in this sequence. Diagnostics means research, find out. And I always say कि marketing के बगैर या marketing department के बगैर आप product price और place की भी decisions accurately नहीं ले सकते, because marketers have their fingers on the pulse of the market. They know what's happening out there. They bring all the news in. They convert it into an insights form, which can be used, actionable insights, which can be used by the finance department, by the HR department, by the product development and manufacturing department. And ये insights कहाँ कौन ला रहा है? Marketer ही तो लेकर आ रहा है. तो मार्केटर की इनपुट के बगैर ये सारे डिपार्टमेंट्स भी एक्यूरेटली प्लानिंग नहीं कर सकते, स्ट्रेटेजाइजिंग नहीं कर सकते. तो दैट्स व्हाट आई थिंक. मार्केटिंग इज द अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट एंड एवरीथिंग एल्स कम्स अंडर इट. बट ऑफ कोर्स नाउ देयर आर अमेजिंग स्पेशलाइजेशंस इनटू ईच फील्ड. सो एडवर्टाइजिंग इज अ स्पेशलाइजेशन ऑन इट्स ओन, ब्रांडिंग इज अ स्पेशलाइजेशन ऑन इट्स ओन, सेल्स इज अ स्पेशलाइजेशन ऑन इट्स ओन, और बहुत कुछ इसके अंदर टेक्निकली भी डिफरेंट हो जाता है. मैम, जिस तरह कहते हैं कि वक्त के दामन को कोई भी कैद नहीं कर सकता, और इस वक्त टाइम अपने प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ जाता है, मगर मैं चाहूँगा कि आपसे कमिटमेंट ली जाए कि आपके साथ हम बहुत सारे जो है पॉडकास्ट करने जाएंगे और आप हमें ज़रूर टाइम देंगी. आई डोंट वांट टू बोर योर ऑडियंस. आई थिंक कि मैं जो है ना बिल्कुल टीचर की तरह लेक्चर देना शुरू कर देती हूँ, आप मुझे स्टार्ट कर दें तो. एंड आई बीन जस्ट टॉकिंग अ लॉट. आई विश I hope it's useful for those who listen to it, and I'll be always available. And it's been a wonderful experience coming here and getting this great studio in Zabis and discovering it. It's like a rediscovery, mashallah, especially after the revamp and the refurbishing of it, and the equipment that you have really artistically set up over here. So it's been a wonderful experience. It's an honor, ma'am. Lastly, any message for the student of Pakistan? Students of Pakistan, I think there is such a huge variation in the students of Pakistan, which is what would lead me to say that you need to follow what you really think is your forte, what you feel strongly about. आप इस ऐसे ज़माने में रह रहे हैं जिसमें आप किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में करियर बना सकते हैं. हमारे टाइम पे 4 एरियाज थे, आपके टाइम पे 400 एरियाज हैं. तो आप अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड ना फील करें, और आप ये ना समझें कि अगर मुझे सोशल वर्क पसंद है तो मैं सोशल वर्क में करियर नहीं बना सकता या सकती, या मुझे फाइनेंस में एक खास चीज़ पसंद है तो मैं उसमें नहीं बना सकती. देयर इज सो मेनी एवेन्यूज. जस्ट डोंट कॉम्प्रोमाइज इन टर्म्स ऑफ व्हाट यू लाइक टू डू, बिकॉज व्हाट यू लाइक टू डू यू विल बी सक्सेसफुल इन. And what you are doing ज़बरदस्ती just for the money or just for the thing, आप उसमें थोड़े अरसे तक तो चले जाएंगे आगे, पर फिर फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होना शुरू हो जाएगी, और फिर वो आप एंजॉय नहीं करेंगे. इवेंचुअली यू विल फील रिग्रेट कि मैं कुछ और कर लेता. सो दैट्स व्हाट आई थिंक. फॉलो योर हार्ट. Yes. So viewers, मैम आयशा लतीफ़ के साथ एक बहुत ही अच्छा टाइम रहा, और मैं उनके बिल्कुल बात से थैंक यू सो मच. थैंक यू. मैं अपनी लाइफ को भी जब देखता हूँ तो मुझे अंडर ग्रेजुएशन के बाद पता चला कि मुझे क्या करना चाहिए और मैं किस टाइप का बंदा हूँ. एंड देन आई लेफ्ट माय स्पेशली अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट साइड ऑफ फील्ड, और मैं मीडिया में आ गया अल्हम्दुलिल्लाह. एंड इट्स टाइम टू से गुड बाय, एंड वी विल डेफिनेटली कम विद अनदर एपिसोड, a very interesting episode. So stay tuned. This is Zab from Digital, and you are watching Meet and Talk.